हेलो एवरीवन। आज हम MHT CET 2024 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट सिर्फ। एन ऑर्गन पाइप इमर्ज इन वाटर टू हाफ इट्स लेंथ। द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप बिफोर एंड आफ्टर इमर्शन इन वाटर इज। ओके, open immersed open pipe। ओके ठीक है, इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। The square loop of sides 2 cm enters a magnetic field with speed 2 cm per second. Assume the front edge enters the field at t equal to 0. Which of the following graph? Okay. Induce EMF. EMF क्या होता है? d phi by dt, मतलब change in flux per unit, change in time, change in flux per unit time. ओके, तो इसके अंदर इंटर कर रहा है। अच्छा, EMF induced in the loop, इसको BLV से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको करते हैं। The de Broglie wavelength of electron moving with velocity c by 2 is equal to the wavelength of a photon. Ratio of kinetic energy of electron. Kinetic energy का रेशियो निकालना है और lambda equal to the wavelength of photon. De Broglie wavelength of electron moving with velocity c by 2. Lambda is equal to h upon mass of electron into c by 2 is equal to the wavelength of photon. Wavelength of photon. The ratio of kinetic energy of electron and photon. मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ और ये वेवलेंथ फोटोन की वेवलेंथ बराबर है, तो रेशियो पूछा है काइनेटिक एनर्जी, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा एच अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। ओके, इसको रखते हैं टाइम पर। डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड इज, नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, तो ऐसा होता है। नोड और एंटी नोड के बीच में ये पूरी वेव जहाँ से रिपीट हो रहा है फिर से रिपीट होना चाहिए। लैम्डा बाई 2 होता है कि लैम्डा बाई 4? आई गेस लैम्डा बाई 4 होना चाहिए। The 3 bricks each of length L and mass m are arranged such on the distance of the center of mass of the system from the wall is। अच्छा, मतलब सिर्फ x कोऑर्डिनेट पूछा है, उसका y कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है। तो सबसे नीचे वाले का सेंटर ऑफ मास होगा L/2 पर, ठीक है। फिर इसका
उसके ऊपर वाले का एल डिस्टेंस पर होगा और सबसे ऊपर वाले का L/2 और L है ना, L/2 ये L/2 तो L से कितना आ गया है? नहीं, L तक तो एक ही है, इसका डिस्टेंस L/4 है, मतलब L प्लस L/4 पर होगा सबसे ऊपर वाले का सेंटर ऑफ मास। सो हम वो नेक्स्ट वन से करेंगे, m इंटू L/2 प्लस ml प्लस ml/4 नहीं ml प्लस L/4 तो 5L/4 5L/4 प्लस L प्लस L/2 तो 3L/2 प्लस 5L/4 12 प्लस 10L/, which is 22/8 11/4 11/4 11/12 समथिंग आ रहा है, ठीक है। The conducting sphere of radius r carrying q lies conducting sphere of radius r carries charge q lies inside an uncharged conducting shell of radius 2r. If they are joined by metal wire, the amount of heat that will be produced is time. In hydrogen spectrum, the shortest wavelength is Balmer series lambda. Shortest wavelength in bracket series Lyman-Balmer Paschen bracket मतलब n equal to 4. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी मैक्सिमम मतलब ब्रैकेट के लिए होगा n equal to 4 से n equal to infinity तक, ओके। और बामर के लिए है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब n equal to 2 से n equal to infinity 1/λ equal to rz स्क्वायर 1/2 स्क्वायर मतलब 1/λ की वैल्यू आ गई rz स्क्वायर बाय 4, ओके। सो 1/λ डैश इक्वल टू rz स्क्वायर इंटू 1/4 स्क्वायर फिर 16 rz स्क्वायर बाय 16 जो लैम्डा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/λ डिवाइडेड बाय 1/λ लैम्डा डैश बाय लैम्डा इक्वल टू rz स्क्वायर डिवाइडेड बाय rz स्क्वायर 16 इंटू rz स्क्वायर तो 16 4 तो 4 lambda will be the answer. If the length of string is shortened by 40% and the tension is increased by 44%, then the ratio of final and initial fundamental frequency final स्ट्रेट स्ट्रिंग अगर इसको खींच ले तो उसका वेलोसिटी ऑफ वेव नहीं
tension is increased by 40%, ratio of final fundamental frequency. NB by 2L, a string. Frequency equal to NB by 2L. As shown in the figure, two vertical conducting rails separated by a distance 1 meter are placed parallel to z-axis. Okay, at z equal to 0. A capacitor of 0.615 farad is connected between the rails and metal rod of mass 100 gram placed across the rails. Right down along the rails. Okay, the constant magnetic field of 2 Tesla is perpendicular to the plane of rails. What is the acceleration of the rod? Acceleration of the rod. अच्छा, रॉड के ऊपर फोर्स लगेगा. पहले तो EMF जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टिंग है सब कुछ, तो EMF इक्वल टू BLV. BLV जितना EMF तैयार होगा 2 इंटू लेंथ कितनी, लेंथ है 1 मीटर, वेलोसिटी अच्छा ये तो एक्सीलरेट कर रहा है. अगर ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है. 4 identical plates of area AD and DH. What is the capacitance between P and Q? Capacitance. अच्छा, इसको A B B C C D D. A और B के बीच में है, B और C के बीच में, C और D के बीच में, मतलब 3 कैपेसिटर है. A और B के बीच में, A और B के बीच में, फिर B और C के बीच में, C और D के बीच में. मतलब सारी सीरीज में आ गए. सारी सीरीज में आ गए. एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय सारी सीरीज में तो एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डी अब 1/3 कह रहे हैं. एप्सिलॉन एरिया बाय डी. D upon epsilon naught area plus T upon epsilon naught area. CET. For the logic gates shown below, correct output is okay. A से जुड़ा है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, एंड गेट, NAND गेट
एंड गेट में होता है ए प्लस यानी ए इंटू बी, और में होता है ए प्लस बी। ठीक है, फिर ये डायरेक्टली कनेक्टेड है नैंड गेट से। सबसे पहले ए, फिर ए इंटू ए का बार, ए इंटू ए का बार, फिर ए इंटू बी का बार, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला। ये सबसे बाद में कनेक्ट हो ए इंटू बी का बार प्लस ए बी इंटू सी का बार, और ये तीनों कनेक्टेड है एंड गेट से। ओके, नॉर गेट से, और सी और ए दोनों बाहर से कनेक्टेड है, तो ए इंटू ए का बार, तो ए का बार प्लस बी इंटू बी का बार, इंटू 3 ए प्लस बी। ओके, तीनों प्लस क्रॉस बी का बार, बी इंटू सी का बार, बी इंटू बी का बार। ए बी प्लस बी सी 2 टाइम्स आ रहा है, तो यही होना चाहिए। An electric dipole with dipole moment and an electric field at an angle of 60 degrees with the direction of electric field. Torque acting on the dipole with torque होता है P क्रॉस C, P sin theta 5 into 10 to the minus 7, E and 2 into 10 to the 4, sin 60 is under root 3 by 2. Ten 5 into 10 की पावर 3 minus 3, 5 into 10 की पावर minus 3 into under root 3. Under root 3 होता है 1.7, 7 by 35, 8.5 something, 8.5 into 10 to the minus 3. C option. In an n-type semiconductor, Fermi energy level is Fermi energy level lies in the forbidden energy gap nearer to the conduction band. In the forbidden energy gap nearer to the valence band. In the middle of the forbidden energy gap, outside the forbidden energy gap. Fermi energy level. N-type मतलब pentavalent मतलब phosphorus to dope करेंगे। ठीक है। Disk of radius r and mass m. A circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut. Disk of radius r and mass m. A circular hole of diameter r. R whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk? अच्छा, अगर डिस्क है ओरिजिनली कितना होगा इसका मतलब ऐसा, तो mr² by 2 ओरिजिनली था, तो उसके सेंटर में से कुछ
निकाल लिया। r/2 रेडियस का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल कितना होगा? mr²/2 से तो कम होगा, mr²/2 से तो कम होगा, तो ऑप्शन इस सब में ही वही है। mr²/2 में से mr²/8 माइनस कर देंगे, 6 mr²/16। Hmm, 3/8। Describe velocity of body on a surface. Its velocity. A body is thrown up with a speed √5 v. Assuming that the sun and planets do not influence the motion of the body, velocity of the body at infinite distance. Infinite distance पर एस्केप वेलोसिटी होती है √v, मतलब उसको v वेलोसिटी दी तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाके रुक जाएगा, और √5v वेलोसिटी दी, v वेलोसिटी दी तो √5 इंटू v, तो √5 वेलोसिटी बचनी चाहिए, नहीं √4v बचनी चाहिए, मतलब 2v बचनी चाहिए। Suppose as intensity of laser is this, RMS electric field in units of volt per meter associated with this source is close to the nearest integer. RMS electric field in units of, suppose intensity of laser is this, RMS electric field in units of volt per minute associated with this source is close to nearest integer. इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी डेंसिटी होता है ½ ERMS स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी से इंटेंसिटी का क्या रिलेशन था? इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया और एनर्जी डेंसिटी पावर इक्वल टू IA/C, ऐसा कुछ रिलेशन है।
तो इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया इक्वल टू आई बाई सी होना चाहिए. Okay. टू फोर एट ओके 3.1 मतलब 24.8 इंटू 10 के बाद 4 10 के बाद 5 बाई 248 225 10 8 पॉइंट समथिंग आया है तो लगभग 400 के आसपास. Each lens produces a virtual and mirror inverted image. Compound microscope for the each lens produces a virtual and inverted image. The objective has a very short focal length. Eyepiece is used as a simple magnifying glass. The objective and eyepiece have convex and convex lens. Virtual image बनाती है ठीक. Inductive reactance of coil is actually inductance of coil is tripled. And frequency of DC supply is doubled. And then if inductance reactance will be. If the inductance of coil is tripled, XL equal to omega L. And the frequency of DC supply is doubled. Omega is equal to 2 pi into frequency. मतलब the inductance of the coil is tripled. Inductance 3 times कर दिया. Our frequency is doubled. 6 times हो जाएगा. Quality factor of a series LCR circuit decreases from 3 to 2. Resonant frequency is 600 Hz. Change in bandwidth. Quality factor
A liquid is allowed to flow in a tube, truncated cone shape. Identify the correct statement from the following. Truncated cone shape. Okay. The speed is higher at the wider end and lower at the speed is low at the wider end and higher at the narrow end. Speed is same at the liquid flows within from velocity. Parallel beam of fast moving electrons is incident normally on a narrow slit. Okay. A fluorescent screen is placed at a large distance from the slit. Okay. Now that the speed of electrons is increased, then which of the following statement is correct? Speed over area. Diffraction pattern is not observed on the screen in the case of electrons. So, angular width of the central maximum of the diffraction pattern will increase. Angular width of central maximum of the tail will decrease. Angular width of the central maximum will be unaffected. Angular width unaffected रहेगी. तो लैम्बडा क्या है? लैम्बडा पर डिपेंड करता है. मास फ्रीक्वेंसी टू सी बाय लैम्बडा और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्बडा की. सो स्पीड बढ़ा दी तो लैम्बडा बढ़ेगा तो सेंट्रल मैक्सिमम बढ़ेगा. A stone falls freely under gravity. It covers distance h1, h2, h3 in first 5 seconds. Okay. The next 5 seconds okay. The relation between h1 is to h3. 1 is to 3 is to 5 वैसा relation होता है. Yes. 1 is to 3 is to 5. B option. Period of oscillation of simple pendulum of length L suspended from the roof of vehicle, which moves without friction down an inclined plane of inclination alpha, is given by. अच्छा, ये ऐसा सस्पेंडेड रहेगा और गाड़ी ऐसे जाएगी. ये अल्फा है तो ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा तो ये अल्फा. अल्फा कॉस टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L by G. लेंथ तो वैल्यू रहेगी G की वैल्यू क्या रहेगी? G cos अल्फा L by G cos अल्फा. Magnetic field at the point of intersection of diagonals. Magnetic field at this point of intersection of diagonals. Square wire of side L. Again, correct type. Okay. Now I made distance over d into not I upon 2 pi r. Not I upon 4 pi. 4 pi d and by 2 sin theta 1 sin 45 degree 2 root 2 into 4 times 4 to minus I by pi L in
2 root 2 to 4. Two into 2 root 2. A body of mass m is suspended. A body of mass m is suspended to an ideal spring of force constant k. Change in position of the body due to the additional force acting vertically downwards. Expected change in position. Due to the additional force acting vertically downwards. अच्छा सस्पेंड कर दिया मतलब वर्टिकली सस्पेंडेड है और अगर एक्स्ट्रा फोर्स ऐड कर दें तो एमजी और वो सब तो ठीक रहता है। बाई 2 क्या होता है बाई 2f बाई के 2f बाई के एक्स्ट्रा चेंज the following statement is incorrect. Dispersion in wave maximum for violet color. Dispersion is maximum for violet color. सबसे ज़्यादा बेंड तो वायलेट ही करता है. Red light travels faster than violet light in the medium. वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और लैम्डा ज़्यादा होती है रेड की मतलब वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी तो सही है. इन वैक्यूम रेड लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन अदर्स. वैक्यूम refractive index of violet light is higher in flame glass as compared to ground glass. वैक्यूम में शायद सबकी वेलोसिटी सेम है. V is the gravitational potential due to sphere of uniform density on its surface. Then what that its value and the center of the sphere will be. अगर पोटेंशियल gravitational potential value of its at its center एक तो स्केलर क्वांटिटी है सबका ऐड होगा और सरफेस पर भी है सरफेस पर भी है. So answer will be de Broglie wavelength of electron is the same as that of the ratio of energy of photon to the reflecting energy of electron is. Ratio of photon to kinetic energy of electron. H upon under 2m kinetic energy. Lambda square is equal to h square upon mk. तो k आ जाएगा h square upon lambda square into 2m.
Okay, ratio of field energies. Let's say it's कटेगा 1 by lambda square. D Broglie equivalent of electron is same as that of D Broglie equivalent same methodology. तो मास स्क्वायर डिफरेंट करेगा. Sound A and B are moving towards and away from the stationary observer with speed. And speed of the source. Curie-Weiss law is obeyed by temperature. Curie टेम्परेचर पर क्या होता है? पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक में बदल जाता है एट क्यूरी टेम्परेचर ओनली. एट क्यूरी टेम्परेचर अबव क्यूरी टेम्परेचर. बदलने लग जाते हैं. क्यूरी टेम्परेचर फिर अबव क्यूरी टेम्परेचर. एट क्यूरी टेम्परेचर. A beam of light composed of red and green rays incident obliquely. A beam of light composed of red and green red light is incident obliquely at a point on the face of a rectangular glass slab. When coming out on the opposite parallel slab, a red and green ray emerge from a beam of light composed of red and green ray is incident obliquely. When coming out of the opposite face, the red and green ray emerge from 2 points preparing in two different non-parallel directions. 2 points propagating in two different parallel directions. One point propagating in two different parallel तो होगा. A ray of light incident I is incident on parallel glass slab at point A. It undergoes partial reflection and refraction. At each reflection, 25% of incident energy is reflected. Time x by I में पूछा है. Each reflection, 25% of incident ray is reflected. मतलब पहली बार सबसे पहले जब मैं रे एंटर करेगी तब उसकी इंटेंसिटी आई. ठीक है. और ईच रिफ्लेक्शन 25% आएगा ना. मतलब इधर से 25% बी में चला जाएगा. इसका हो गया 25/100. मतलब बी वाले की ए बी वाले की इंटेंसिटी आ गई मेरे पास. अब इधर से जाएगा 75 इंटू I/100. 75 I/100 जाएगा. रिफ्लेक्ट 25% ही बचेगा इधर.
75 1 by 100 का 25%, 25 by 100, 25 by 100. Okay. फिर से इसका 25 by 100, 75 by 100, 25 4 100, 500 by 25 4 10 20, 15 3 by 4, 3 by 4 into 3 by 4 9 by 16 into 1 by 4 9 by 64, 9 by 64 है, ठीक है। और ऊपर वाले का था 9 by 4, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर है ना, I1 बाय रूट ऑफ I, मतलब इसका रूट ऑफ I बाय 4 प्लस रूट ऑफ 9I बाय 64 का होल स्क्वायर, कितना आया, रूट I बाय 2 प्लस 3 बाय 8I रूट I का होल स्क्वायर, आई से आई कट जाएंगे सब, 1 बाय 4 प्लस 9 बाय 69, 4 प्लस 2 into this 3 by 8, 64 plus 9 36, 4 into 4, 100 upon 16 into 6 plus 3 by 8, which is 50 upon 143, 50 upon 143. Two on the 2, 2 to the 4, 1 to 2, 86, 128, 25, 64, 25 by 64, 25 rates are 200 plus 64 3s are 192, the 32, you know, is 45, 10, 51, 512, 2, 9, 392 upon 512, 202, 196 upon 256. Yeah, take it. No, 7:40, 1:1. Two bodies mass of masses 1 kg and 2 kg are having equal momentum. Then ratio of kinetic energy. अच्छा, kinetic energy is p square by 2m, p square by 2 into 1 divided by p square by 2 into 2. So p square by 2 into 4 by p square. So 2 is the ratio. Electron moves at right angle
MV by VQ. R equal to MV by VQ. Specific charge. मास 1 किलो का कितना चार्ज है? वेलोसिटी 6 × 10⁻⁷. Magnetic field 5 × 10⁻⁻². Charge है 1.7 × 10⁻11. 10⁻9. 10⁻9 by 17 5 are 10. So 7 to 10 5 are 75 80 or 85. 8.5 or 11. 60 upon 85. So dividing and dividing into a -3. 9. 5 on the 5 on the 5 to the 10, 5 on the 5, 35, 17 by 20. तो 20 by 17 कितना आएगा? तो 20 by 17 17 5 are 85. और 7 तक जाना चाहिए आई गेस 2.9 शब्द है. Power factor cos phi R by Z. R upon Z. Z कितना है? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर तो 9R स्क्वायर का अंडर रूट 10R स्क्वायर का अंडर रूट मतलब रूट 10R. रूट 10 into R. cos phi of 1 is 1 by root 10. दूसरे का अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC तो 2R का होल स्क्वायर मतलब 4R स्क्वायर मतलब 5R स्क्वायर रूट 5R 1 by root 5. B2 है पूछा 1 by root 5 में 1 by root 10 मतलब root 2:1. गैल्वेनोमीटर से 5% ही करंट जा रहा है मतलब शंट रेजिस्टेंस से 95% करंट जा रहा है. ओके रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर. शंट रेजिस्टेंस मतलब आई को गैल्वेनोमीटर जी है
जी का करंट, जी से जो करंट जाएगा और शंट रेजिस्टेंस से जो करंट जाएगा वो सेम रहेगा ना, तो जी इंटू आई बराबर शंट रेजिस्टेंस इंटू आई माइनस आई आई माइनस आई, जैसे जो करंट गया आई माइनस आई, ठीक है, जी आई अपॉन आई माइनस जी, आई माइनस आई। अच्छा, इधर से 5% जा रहा है, मतलब आई की वैल्यू इज इक्वल टू 5 इंटू आई बाई 100, 5 आई बाई 100 मतलब 5 to the 10 आई बाई 20 divided by I minus I by 20, 19 I by 20 plus I beta G I by G by 19. A nichrome wire 50 cm long and 1 mm square, cross section carries current of 4 ampere. R equal to rho L by area. B equal to I R equal to current into R. R की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो R equal to 1 rho L 50 into 10 की पावर -2, एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 into 10 की पावर -6, 1/2 into 10 की पावर -6 by 50 into 10 की पावर -2 is equal to rho. So 1/100 into 10 की पावर -4, so 10 की पावर -6. Consider a conducting wire of length L bent in the form of circle of radius R. Another conducting length A is bent in the form of square. What will be the mutual inductance between the two loops? Mutual inductance बाहर वाले की वजह से अंदर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो in an ideal gas the masses of all the molecules are doubled. Okay, and their speeds are halved. The ratio of initial and final pressure of the gases. Pressure equal to 1/3 rho into Vrms square. मास से डबल कर दिया, डेंसिटी को मतलब 2 टाइम्स रहेगा, एंड स्पीड इज हाफ, स्पीड हाफ कर दी उसकी, मतलब 1/4 कर दी, मतलब प्रेशर हो जाएगा 1/2. Initial to final 1/2. A piece of blue glass heated to high temperature and the red glass at room temperature are taken inside a dimly light room.
ज़्यादा शाइन कौन करेगा? रेड वाला ज़्यादा शाइन करेगा, ब्लू वाला शाइन मैटर। Ideal gas has heat engine operates at mid-20s. The amount of heat converted into a body is executing a system with frequency and the frequency of potential energy. Frequency of its potential energy. Potential energy. Potential energy की frequency. Potential energy half k a square. Half k square. So potential energy क्या है? $50 grams of copper is heated to increase temperature by 10 degrees Celsius. ग्राम कॉपर को हीट कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए. The same quantity of heat is given to 10 grams of water. Okay. The rise in temperature is delta Q equal to ml delta T. $50 ग्राम एस कितना है ऊपर का 420. डेल्टा टी कितना है 10. ठीक है. डेल्टा क्यू कितना हो गया. अब इतनी हीट मैंने दी है पानी को इक्वल टू एम कितने में पानी को 10 ग्राम एम इंटू एस पानी का 4200. डेल्टा टी राइज टेम्परेचर डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितने ये 10 की बात है 10 की बात है घटा 10 से 10 तथा 5 इंटू 420 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 डिग्री सेल्सियस. An ideal gas is subjected to cycling process involving 4 thermodynamic states. The amounts of heat Q and work W involved in the three states. Incorrect statement about Zener diode is emission form is very wide. PN का रीजन हेवीली टॉप्ड होता है. PN का रीजन हेवीली टॉप्ड होता है. Depletion region formed is very wide.
Ratio of intensity of central light to maximum central light to its intensity at a point or distance 1 by both the distance between the two successive bright vintage will be. Gaussian ratio. Lyman का shortest value maximum energy infinity 100 square into 1 by 1 square 1 is लास्ट में 1 आएगा 1 by lambda equal to 1 RZ square उल्टा है सबसे ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी स्क्वायर इंटू बाय पार्शियल बाय 9 बराबर का है 1/4 ओके पार्शियल का तो सबसे ज़्यादा होगा नहीं सबसे ज़्यादा वेवलेंथ पार्शियल की है फिर बामर की है और फिर लैमन की है What is acceleration as the sphere reaches the bottom? A equal to g sin theta upon 1 plus I by m square. G sin theta upon 1 plus sphere का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 m square plus I by m square 7/5 मतलब 5/7 Animal will return to acidic strength for the given alcohols. ज़्यादा स्टेबल वाइस माइनस मतलब 3 का सबसे ज़्यादा फिर 2 का फिर 1 का as electron pair the conductivity is this then molar conductivity kappa into 1000 by molar mass 0.024 1000 into 24 by 5 1.5 240 by 5 5 4 20 divided by 40 the correct statement about carbon and CO2 minus it has planar structure it has one coordinate bond it has 3 resonating structure 3 resonating एक ही होता है 3 होते हैं पर इक्विवेलेंट है analysis of CET minus ion gives basic solution planar structure and coordinate bond CET minus basic होता है yes number of pi electrons present in naphthalene naphthalene होता है 2 बेंजीन मतलब 6 6 number of H plus ions present in 1 mol of solution of pH is this pH 13 मतलब H plus की concentration होगी 10 की पावर -13 concentration है 10 की पावर -13 मतलब n by V की वैल्यू in ml
इंटू 10 के बाद ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ml का -3 10 के बाद -16 6.0 to 20 10 के बाद -23 into 10 के बाद 23 18 19 20 21 22 10 के बाद 7 different the given mode of hybridization sp2 sp2 sp मतलब correct sp2 मतलब एक बॉन्ड एक डबल बॉन्ड sp2 sp2 sp C6H6 plus O3 can ZnH2 ozonolysis triozonide बनेगा ग्लाइकोसिलिक एसिड ग्लाइकोसिल बनेगा क्या जिंक है मतलब ऑक्सीडेशन को रोक देगा वो तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा तो ग्लाइकोसिल सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेशन BCC लैटिस फेज लेंथ रेडियस ऑफ सोडियम कैलकुलेटिव सवाल at a gas pressure 2 atm is heated from this and simultaneously compressed to this final pressure. Organic compounds as chromazine, ethyl butanoate, butanol, 1 2 3 3 methyl butanol सही है 2 methyl 3 butanol 2 पर methyl नहीं तो पॉइंट देंगे 2 methyl 3 butanol 3 4 5 2 methyl 3 pentanol 3 methyl butanoate वो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ना using soaps made of vegetable oils okay instead of synthetic detergents whenever possible green chemistry using H2 for bleaching purposes instead of chlorine based bleaching agents using liquefied CO2 for dry cleaning clothes as to cans for neatly storing substances पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है ग्रीन केमिस्ट्री तो H2 ब्लीचिंग पाउडर इंस्टेड ऑफ क्लोरीन ये होगा using liquefied CO2 for cleaning storing substances cleaning storing EAN effective atomic number of aluminium है C2O4 2 minus C4O4 क्या है C2O4 2 minus मतलब -6 में चाहिए एल्यूमिनियम +3 में मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का इसके मतलब 3 मतलब 13 होते हैं 10 बचे और इससे कितने मिल रहा है C2O4 2 minus से हर एक से 2 मिल रहा है और
3 है तो 6 मिलेंगे, उसको तो 16। Value of DH2 by at the same temperature. What is the value of DH2 by dt? DH2 by dt. को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.06। कोऑर्डिनेशन नंबर का N2O, सोडियम N2O। सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो मतलब सामान को रिड्यूस करेगा ना। PbO2 ऑक्सीजन निकल के जा रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है। लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। Not chiral. 1 chloropentane, 1 पर chloropentane chiral नहीं है, तो chloropentane से chiral है। Difference between heat capacity at constant pressure and heat capacity at constant volume. Okay, heat capacity at constant volume is delta U, and heat capacity at constant pressure is delta H. Delta H equal to delta U plus PV. Delta H minus delta U equal to PV. PV equal to nRT. nRT. R by T, R by V. Here the following solution will exhibit highest melting point.
जिसका सबसे ज़्यादा वेंट ऑफ फैक्टर हो उनके सेमी तो अल्फा सबसे ज़्यादा पर टूटेगा तो टूटेगा सबसे ज़्यादा फिर भी लोग नहीं टूटेंगे एनी तो ऐसा टूटेगा सबसे ज़्यादा कीमत टूटेगा ये होगा आंसर 20% of the first order reaction was found to completed in 10. Okay, I have 5 minutes. First order reaction was found to completed same day 20% of the reaction. Okay. Gel is a colloidal solution of jelly. Okay, solid or liquid? Solid or liquid? No. Liquid and liquid, solid and solid. Liquid and liquid. Which reagent gives pink color with aldehyde? aldehyde के साथ पिंक कलर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पॉलीटेन नहीं है पेकलाइट PHBB होगा लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन लायोफोबिक प्रोटीन स्टार सॉल्यूशन डेल्टा TF इक्वल टू IKF into M KF दे रखा है 5.12 then freezing point into M डेल्टा TF कितना है के निकालना है मोलालिटी 251.2 rate of solvent 2, 3, 4, 5 MnO4 गया है +7 से +4 में तो आएगा 3 तो आएगा सेकंड वाले में 3 या फिर 6 भी आ सकता है मैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8.6 मेरी आंसर ओके 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन 2 पर मिथाइल है 2 पर ब्यूटीन भी है half of the actual value absolute associates when the solvent is experimentally calculated molar mass using boiling point elevation method will be okay associates in solvent अच्छा मतलब associates in solvent मतलब उसका solvent के साथ associate हो रहा है तो boiling point बढ़ जाएगा homoleptic ANC for ANC the following is false for alkali metals सही है all alkali metals give blue solution in liquid ammonia as I is mostly so lithium carbonate is more stable towards the
E10 बनाते कंपनी। ओके, पेपर डन। इसका एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में।